Namaskar and good evening. I welcome you all to the last Masterclass of Vishwarang International Film Festival. Today we have with us Mr. Shivendra Singh Dungarpur as our esteemed guest. Friends, Mr. Dungarpur is a National Award winner director and internationally renowned filmmaker. He is also an archivist and founder of Film Heritage Foundation, Mumbai, which performs archiving and restoration of cinematic heritage. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Along with him, we have Mr. Sudeep Sohni, who is going to moderate this masterclass. Friends, Sudeep is a young and talented writer, filmmaker, and also the director of Vishwarang International Film Festival. Sudeep, आपका बहुत-बहुत स्वागत. Thank you, Sharmani. आज सुदीप बात करेंगे नीड टू सेव सिनेमेटिक हेरिटेज के ऊपर शिवेंद्र जी से. सुदीप, over to you. Thanks. Thank you to all the viewers. Welcome to all of you, and welcome Shivendra sir. It's a privilege having you with us, and we were trying for a couple of years that we can have a discussion with you. Finally, we are having you in our film festival, and so I have a lot of questions with you, but I think time is also very limited. But I will straightforwardly ask a very basic question, the fundamental question, because whenever I got chance to meet seniors and masters like you, I want to go to the basics. So I want to start with a very basic thing, basic question: what is cinema? Because there is a differentiation between artistic and commercial cinema. So your point of view can direct us and lead towards where we can focus upon this discussion. So I want to start with this basic question: what is cinema for you? You know, Sudeep, you're asking me a very interesting question because some years ago, I went around with the camera asking some of my favorite filmmakers, what did cinema mean to them? When I talk about favorite filmmakers, they were mostly people like Wim Wenders, Miklos Jancho, or Andre Vaida, or because I had the opportunity to meet a whole lot of European filmmakers at one point, including Ken Loach, who's a British filmmaker. But obviously, as every filmmaker, one has its own interpretation of what is cinema. If you really look at what I feel about cinema, and of course, the definition has been defined by various artists. It's like asking any artist, what does the medium mean to him? And he can define it in many ways. It could be the canvas, it could be the paintbrush, it could be the painting itself. But I think for cinema, for me, means a journey, a visual journey, which has a form, which I'm able to express myself through that form, and which is within a cinematic language, which is very key. When we make a film, we think, first of all, everybody thinks he can make a film. And, I had spoken in the opening ceremony about this aspect that everybody who's got now a mobile phone or any sort of digital medium, or a digital device, immediately starts feeling that I can make a film, or I'm making a film, or my film is better than the other. But film has a language, and I think, like every form of art, you and I both can write poetry. You and I both can write dialogues. We both can write scripts.
But are we that great in that? Do we have a language to that? Gulzar, when I was assisting Gulzar Saab, he told me that write the dialogues for this. And I said, sir, मुझे dialogue लिखने आता नहीं है. मैंने dialogue लिखा नहीं है अभी तक. So he says, ऐसा हो ही नहीं सकता, because everyone, you are like a pencil. It depends how you sharpen yourself. And everybody has the same talent. You're born in this world with the same talent. But it depends on you how you sharpen your talent in the aspect. So cinema is basically for me a visual journey. And for me, the image is the most important in cinema, more than dialogues. For me, if an image can tell a story, because first thing, what do I do? When I close my eyes and when I open my eyes in the morning, for me, that is cinema. That I see the first vision of my life. And what I see is I'm able to transform that image into my mind and able to understand that image so quickly. Then why are we so dependent on dialogues? Is it that the audience is so dumb, or they're not able to understand? Because all of us experience the power of that image. We wake up or we go somewhere, we see an image. In our minds, we are always framing, because through a mobile, you're framing all the time. You're right. You're taking an image, you're taking a photograph. And do you write dialogues with that image and send it to your friends? You don't. So to me, cinema means a visual journey. And why a journey? Because I never look at the end result. That is never important. Always the experience. So cinema has to be connected with your experience, how you enjoyed that experience. What was that experience? Whether the painting was beautiful or not beautiful, or whether others think it's nice or not nice. The moment you start thinking about the result, it's where the problems begin. Because no art is done with thinking of a result. It is the commercial side which puts in all the sort of parameters. But a true artist is one who is free from all this, who expresses, like some of the great filmmakers whom we just talked about, and who takes you through this visual journey, a journey which he has sort of imagined, and he wants you to be moving with his journey, his dream, his visual sense. And in the end, for me, always what is important is that how I have experienced. In fact, many times I don't even watch my final thing, because the end result is never important for me. What is important is what I've experienced. So, and again, the form, whether it's a fiction, non-fiction, short film, docudrama, whatever you decide, it has to make you feel the sense of your journey. And I think once you're able to achieve that, it's almost like nirvana. It's almost like haiku poem, It has to be that, because finally cinema is an amalgamation. It's amalgamation of so many visual art which exists in this world. Whether I, as a child, I used to take train journeys and I used to sit by the window. And in those days, the screens were 4x3, which was exactly the compartment of the first class. And I used to observe that image, and that used to stick in my mind, And since then, your eyes are trained to watch that image, and your eyes are clicking. And sometimes I feel that, I am a prolific, I shoot a lot on my film cameras, still film cameras. And I think somewhere I take away that experience, because what your eyes are clicking, what your eyes are retaining, what your eyes are observing, and I'm never able to get that image what I saw. I always feel that there is a distance between what you saw and what you captured. And also the vision, because you're able to see much wider.
So your eyes are like the 70 experience of that. So that's why I think cinema to me means that experience. Yeah. I mean, in so many ways, Yeah. So you told about the experience or about the journey. What I have felt when I have when I meet you or I discuss you or when I see your films like The Celluloid Man or recently when some portions of The Immortals, what I have gathered that there is a very personal, deep connection of cinema. I mean, that is very personal connection which we experience after seeing your film or whenever I have chanced upon to discuss with you. I have, as you mentioned, you started with Gulzar Saab and then you joined FTII, and then a prolific career you have had in advertising as an ad filmmaker. Before coming to the central theme of this discussion, need to save cinematic heritage, I wanted to know from you how Film Heritage Foundation conceived and what it does. You know, like when you like all filmmakers, you're so busy with thinking about just making films. Just thinking about what is going to be your next project. What are you going to do next? You certainly don't think about preserving them. You certainly don't think about to certainly think about what has happened to them or where are they. I mean, you may get a phone call from somebody, or you may get a message, or you may get a letter saying, "Oh, we saw you on this film." It's like some people tell me, "You've seen Celluloid Man," but really, are you concerned about where it is lying, what it is, and those kind of stuff, which was happening. So I also went through that phase where I had finished from FTI. I was busy with my career, and I read in an interview of Martin Scorsese, and I went to Bologna in Italy to watch one of the restored film festivals, which Scorsese was speaking about. Didn't realize that I will start collaborating with him in restoring Kalpana, which was Pandit Uday Shankar, the elder brother of Ravi Shankar, the great sitar player. His film, one of the most spectacular films shot in Chennai, with Uday Shankar himself being cast. And I think that's the first time I realized when I went to the NFAI, of course, now as at a different perspective, and having met PK Nair, that look at our wonderful heritage which we have, and look at the conditions of those heritage. Look at the conditions of those films, and look at the struggle of getting them restored. Because here I was in Italy and I was seeing such magnificent Hollywood films, Italian films, European films, all restored, beautifully presented by the filmmakers. And here was Scorsese so concerned about the world's cinematic heritage, not just the heritage of his films. And actually that made me really realize that as a filmmaker, how did you become a filmmaker? You become a filmmaker by continuously watching films of the great masters who become your gurus. Now, what do you do to your guru, or what you do to your father's heritage? It's the people whom you've learned from. You've got to understand that you've got to preserve that heritage. Because how is the younger generation who are going to come after us are going to be able to see those classics or see those films of Kurosawa, Fellini, Satyajit Ray, Ritwik Ghatak, or even the earlier films, How are they going to take back of what exactly was the time and the period when these films were made? Because after all, we preserve in museums, we preserve stones, pottery, we preserve also Harappan civilization. There's a pottery piece and all. I say, wow, how old is it? 3,500. But here we as human beings are there. Why don't we preserve this? So I've always felt, and I always keep saying that unless you know where you came from, you will not know where to go. And
films are that reflection of where you came from and where you want to go, because everything has been created at some point or the other. So having said that, I was very clear in 2014 that there has to be an organization which is non-governmental, which doesn't rely on government itself, because government has its own policies and the own ways of looking at things. And also, when you're producing over 2,000 films and you have such a strong regional cinema, a lot of people who are not aware that we are making films in almost 36 to 37 languages, over 2,000 films before the pandemic came. Just imagine what it would be to censor the number of languages. How many people would you need to just censor the 36 different languages? And the South produces a large amount of films. So just one national film archive in Pune won't be enough. And then you need somebody really passionate. P.K. Nair had retired long time ago. So with the help of the film industry, and especially Shri Amitabh Bachchan ji and Jaya Bachchan ji, who were great support to me, and having my experience with Scorsese on the restoration of Kalpana through his film foundation, wonderful people, Margaret Body and Kristen Marola and Jennifer Ann, and of course, Cecilia Cinciarelli, who was really instrumental in getting us all together. We thought the best way to preserve India's cinematic heritage would be in 2014, set up the Film Heritage Foundation, which would be an Indian organization, Indian NGO, but the main focus will be to preserve and restore India's cinematic heritage, but also bring in education as a major force by doing workshops and training people, and make film preservation a career option, and also have educational programs for children who can start understanding the importance of preservation at a very young age, so that when they grow up, they realize that the visual medium which we all are in, because now life is about the visual medium. You're always with your mobile phone, which has become as important as your clothes. So basically, without the mobile, you don't step out. And what you do with the mobile, you're always visually texting, or you're visually sending messages or photographs. And for a young kid who's growing up, if he doesn't understand the value of what an image is, and once he understands the value of that image, he may not click each and every photograph. He may think before clicking, like how our fathers did, or how we did at the early stages, where we used to frame the person and say, okay, move this way, move a little bit this way, I'm framing. The light is not correct. Can you stand the other way, the sun? Now with your mobile, you don't care. In fact, you don't even need to look, because they're just clicking on and off. And if you're walking on Marine Drive, the amount of selfies and amount of images are being clicked, it would be to the tune of every second, there would be about 1,000 images on just Marine Drive. So I think the role of the foundation was to build on this. And we started it with building our film archives. Particular word, the cinematic heritage. Oh, sorry, I didn't hear that one. Yeah. I want you to elaborate this particular word, cinematic heritage, and then I would like you to share why we need to say the cinematic heritage. I can combine both. Well, if you first look at, let me give a few statistics of where our heritage was heading. You see, films in India have been part of our consciousness, you know what I mean? Our fathers, our forefathers, and we all grew up with cinema and cricket. I mean, that's what our lives are been. So cinema is a reflection of who we are. And it is, if you take a shot
in cinema, you're capturing that time and that space. Only cinema is Shivani? if, I think there are some, yeah, Some interruptions. feedback, yeah. if, Some interruption. Yes, sir. yeah, if you really want to look at some of the statistics, we have lost nearly 99% of our silent films. 99. By 1950, we had lost nearly 70 to 80% of our heritage. That means we're losing films, we're losing. And when we talk about cinematic heritage, a lot of people ask me, is it Bollywood? I say, Yeah. I say it is cinematic heritage, which means films from across India. There are 10 film industries in India, documentaries, avant-garde film, artistic film, TV series, all kinds of visual medium which exists. Dr. Salim Ali, who's the ornithologist, his films. I mean, till 2014, everything, including your X-ray, was done on film. If you remember going to an operation theater, they would take an X-ray of yours. You would not get it instantly. They would tell you to come later and collect it. And even now, I've got that habit. When I go to an X-ray, I said, should I collect it tomorrow? They said, why? Because you're so used to it growing up, because it used to come back, because they had to expose that and then give you the X-ray. So, films, celluloid was with us till 2014. And today is just 6 years. And we're thinking it's the end of it. So, cinematic heritage means the heritage a cinema format. I think there is some connection error, but Yeah. Sharbani, we are having some a conversation. Yes, such a Because- different and very nice perspective. Usually people don't think about it, that we have lost so many, 90% of using cinematic history is such a huge loss, which nobody thinks that it is a loss. Yes. Definitely. Whenever I got a chance to meet sir, he shares all of these statics and everything. Okay. Sir, yeah, please, you can continue. Yeah. No, I want to ask. I've answered your questions. Now you need to ask me again. So, because what you have said now, cinematic heritage belongs to all of us. But how a common man can be associated with it? Because it's a very specialized work. No, common man is already associated with it because by watching the film, and if he can watch the film, he can support it. He can support by giving finance. He can support it by being involved in various works which we do. There are lots of work of in terms of spreading awareness, and a common man in India. It is always said that all foundations and archives have been built by the common man. The common man only built the Taj. The common man only built all the monuments. So it's never we should never underestimate the common man. And I'll give you an example. There's a lovely boy, a young man actually, who lives in Calcutta. Very profoundly, he donates 1,000 rupees every month from his salary for the cause of preservation to the foundation. And I've told him, are you sure? Because I don't think, but he feels for it. And he gets involved in workshops. He volunteers because many times you need volunteers. So it all depends. You see, film heritage and is such a personal thing for people, and it's so connected because we all love cinema. Yes. And we all want to be connected with cinema. So I think when we talk about the common man, they will find their ways. But
they will always be connected, because finally cinema has a popular sort of, it's meant for the common man. Yeah. Sir, I want you to share what कितनी सारी चीजें, कितनी सारी फिल्म्स और क्या सिनेमेटिक हेरिटेज जो हैं वो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के पास हैं, मतलब अलग अलग तरह की फिल्में या रील्स या फोटोग्राफ्स. प्लीज शेयर सम ऑफ द थिंग्स. तो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का सबसे पहला लक्ष्य था कि हम फिल्म जो सेलुलॉइड में है, जो उनको बचाना सबसे बड़ा पहला हमारा कार्य था. क्योंकि कनेक्शन का मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है उनकी तरफ से. जी हाँ शर्बानी, पर तुम्हें नहीं लगता कि कितना कमाल का खजाना जो है वो शिवेंद्र सर जो है वो हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई हैव गॉट अ चांस टू विजिट फिल्म हेरिटेज फाउंडेशंस आर्काइव, और मैंने ये भी सुना है कि वो बच्चों के लिए भी फिल्म की वर्कशॉप जो है वो करते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सर हमसे जुड़ चुके से जी. तो हमारे पास करीब अभी 500 से ज्यादा सेलुलॉइड फिल्म्स हैं. श्याम बेनेगल साहब की फिल्में हैं, मणिरत्नम जी की हैं, अमिताभ बच्चन जी की हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर जी की हैं, विशाल भारद्वाज, ऑनेर, सुमित्रा भावे एंड सुनील सुक्तंकर, ऐसे बहुत सारे, बुद्धदेव दासगुप्ता, गौतम घोष, ऐसे कई लोग हैं जिनकी फिल्में हमारे पास हैं. उसके अलावा करीब 50,000 से ज्यादा हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, लॉबी कार्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, और न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं. हर रोज फाउंडेशन में और आर्काइव में जो भी न्यूज़पेपर सिनेमा से जुड़ा हुआ है, कुछ भी आर्टिकल आता है उसको हम बचा के रखते हैं. स्क्रिप्ट्स हैं, सिनेमा टिकट्स हैं, और बहुत से 3D मटेरियल है. जैसे वीके मूर्ति साहब का हमारे पास उनका पूरा जो वो है, और केएल सहगल जो मेरे बहुत फेवरेट गायक, एक्टर, और जो भी कहें आप, जिन्होंने देवदास जैसी फिल्मों में काम किया है, उनका हारमोनियम हमारे पास जो वो लेके जाते थे. और ऐसे श्याम बेनेगल जी के कई फिल्मों का सामान है, और आयस जौहर, सोराब मोदी, केदार शर्मा. तो एंडलेस लिस्ट है, और काफी कुछ हमने अभी सेव किया है और प्रिजर्व कर रहे हैं. और हम चाहते हैं कि हमारा एक खुद का स्पेस हो जहां पर हम विजिटर्स को बुलाएं और दिखाएं, और एक तरह से फाउंडेशन एक आर्काइव और म्यूजियम की तरफ बढ़ रहा है. और हम आज सेकेंड इंस्टीट्यूशन है एनएफएआई के बाद, और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो आर्काइव के माध्यम से है. और आज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव जो ब्रसेल्स में बेस्ड है, हम उसके साथ भी जुड़े हुए हैं. तो और ऑस्कर एकेडमी के साथ हमने ओरल हिस्ट्री भी शुरू कर दिया है. कई ऐसे महान डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर और एक्टर्स के साथ ओरल हिस्ट्री रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हमने. सौमित्र चैटर्जी जिनका देहांत हुआ अभी, उनका भी हमने ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड किया था. 2 दिन लगे थे हमें रिकॉर्ड करने के लिए. माधवी मुखर्जी हो, बुद्धदेव, मणिरत्नम जी हो, अडूर गोपालकृष्णन जी हो. सो हमारे पास अडूर गोपालकृष्णन जी के सारे फोटोग्राफ और काफी कुछ पोस्टर्स हैं. तो आई मीन रोज कुछ ना कुछ हम प्रिजर्व करते रहते हैं. जैसा मिलता रहता है, लोग डोनेट करते हैं, जिस तरह से भी आए. हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हम इंडिया का जो सिनेमैटिक हेरिटेज है हम उसको प्रिजर्व करें, और लोगों के बीच या एक माध्यम के द्वारा हम लोगों के बीच में इसको दिखाएं और शिक्षा प्रदान करें. सर जब थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने शर्बानी से ये चीज शेयर की थी कि क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे, और
आई नो आप कितने पैशनेट हैं एक एक चीज को लेकर, और मुझे भी खुशी है कि सिनेमा पर जो मैं कुछ लिखता हूँ आप तक वो पहुंचा है, और वहां पर वो स्टोर है, वहां पर रिस्टोर है। और मैं एक ये चीज जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव हैड प्रिविलेज टू विजिट द आर्काइव, और मैं लगातार डिजिटल मीडियम पर भी देखता रहता हूँ कि काफी सारे लोग वहां पर विजिट करते हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट द कॉमन मैन, और जो आपने अभी वो बात की, पर एक कॉमन मैन को या सिनेफाइल को या सिनेमा स्टूडेंट को कैसे एक्सेस एफएचएफ से मिल सकता है, या वो चीजें वो किस तरह से वो एक्सेस कर सकते हैं? देखिए, हम अभी इस मोड़ में हैं कि उसी दिशा में हम जाना चाहते हैं, और क्योंकि ये एक फाउंडेशन और एनजीओ है विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, सो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम कह रहे थे कि कॉमन मैन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे फाउंडेशन जो रिलाय कर रहे हैं पर्सनल फंडिंग के से और कुछ भी माध्यम से जो फंडिंग जी मुझे लगता है इंटरनेट फिर थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। सुदीप, मैं सर से ये भी जानना चाहूंगी, करते रहते हैं सर जुड़ चुके हैं जी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम ये फाउंडेशन और आर्काइव को एक म्यूजियम के माध्यम में डालें और उसको एक्सेस कराएं, ताकि कॉमन मैन या कोई भी सिनेमा स्टूडेंट हो, खैर सिनेमा स्टूडेंट और सिनेमा रिसर्च पर्सन तो आज भी ईमेल डाल के वो आ सकते हैं, लेकिन कॉमन मैन के लिए हम जल्द से जल्द होप कर रहे हैं कि हम सक्सीड हो जाएं, जो हमारा मिशन है, और हम लोगों के बीच में आ पाए। और ये सब तो उन्हीं का है, हम तो खाली प्रिजर्व कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई आर्काइव या म्यूजियम में हम जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि हम वो चीज देखते हैं और उसको शेयर करते हैं, और वो उसके साथ कुछ तरह से फेमिलियरिटी या एक तरह से कुछ पर्सनल अटैचमेंट की तरह हम कहते हैं कि यार ये मेरे फादर हैज एक्सपीरियंस दिस, या मेरे ग्रैंडफादर ने एक्सपीरियंस किया है, ये वहां हुआ था। तो सिनेमा तो बहुत जुड़ा हुआ है, तो जब भी आप जाएंगे वो पीढ़ियों को जोड़ देता है। अगर आप पूरे परिवार के साथ जाएंगे तो एक बच्चे को मिलना चाहिए, वो फैन है रणवीर सिंह का, फादर है फैन शाहरुख खान का, और ग्रैंडफादर है फैन दिलीप कुमार का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिनेमा में इतना पावर है कि वो पीढ़ियों को जोड़ देता है, वो संबंधों को जोड़ देता है, वो दोस्तों को जोड़ देता है, वो धर्म को जोड़ देता है, क्योंकि फिल्म में कोई धर्म होता ही नहीं है, फिल्म ही एक धर्म है। तो हम वहां पर जात पात या धर्म की बात करते ही नहीं है, बल्कि इश्यूज को उठाते हैं ताकि सोसाइटी में एक तरह से इंस्पायर होकर। तो आर्काइव का भी वही महत्वपूर्ण है। आर्काइव माने सुदीप एक्सेस, आर्काइव का मतलब भी होता है। तो जब हम अपने आप को आर्काइव बोल रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी एक्सेसिबिलिटी डालना पड़ेगा लोगों के बीच। ऑफ कोर्स जी सर, होपफुली कि वो काम जल्दी हो। और बहुत मेरे जैसे लोग जो फिल्म मेकिंग में तो हैं ही, पर बिकॉज ऑफ यू ओनली आई हैव गॉट द आइडिया, और या ये मुझे मौका मिला कि मैं इतनी बेहतरीन चीजों को या हेरिटेज को देख सकूं, समझ सकूं। शर्मा, हाँ, मैं सर बतौर कॉमन मैन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि इस पूरे रिस्टोरेशन का, अभी तो डिजिटल एज आ चुका है तो काफी चीजें आसानी से शायद रिस्टोर की जा सकती हैं, प्रिजर्व की जा सकती हैं, लेकिन जो पुरानी फिल्में हैं, जो रील वाली फिल्में हैं, उनको कैसे, क्या प्रोसेस होता है उसको रिस्टोर करने का? नहीं, उसका देखिए, मेरे ख्याल से हमारे पास वक्त नहीं होगा इतना लंबा बताना। मैं आपको एक साधारण बताता हूँ जी। जब सेलुलॉइड फिल्म, जो पहले फिल्में सब सेलुलॉइड होती थी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं एक सेलुलॉइड लेके आता ताकि आप लोग देख पाए।
ये देखिए, तो ये लोगों को रील दिख रहा है, ये एक कैमरा है और प्रोजेक्टर है। तो ये पहले फिल्में इस रील्स में होती थी, स्पेशली पीपल हु डू नॉट नो अबाउट रील्स। एंड ये रील्स को बहुत इजीली हम स्कैनर में डालकर उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि खूबी उस बात की है कि जो फिल्म है उसका पावर आज 24K तक है। और अभी आप डिजिटल माध्यम में खाली 4K में घूम रहे हैं। तो सेलुलॉइड आपके लिए गोल्ड है। तो आप हर वक्त जब वो के बढ़ता जाएगा, आपको वो स्कैन करते रहना पड़ेगा। और आप आज भी 1895 की फिल्म, 1896 की फिल्म आराम से देख सकते हैं। डिजिटल का क्या प्रॉब्लम है कि डिजिटल फिल्में में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि माइग्रेशन का, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेना और उसको अपग्रेड करना। और टेक्नोलॉजी जब बदल जाता है तो वो वहां ही रह जाता है, फिर आपको आगे का टेक्नोलॉजी से आगे शूट करना पड़ता है। बल्कि फिल्म में वो प्रॉब्लम रहती नहीं है, वो लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो सेलुलॉइड भी डिजिटल स्कैनर्स हैं, बड़े बड़े आरी के स्कैनर्स हैं, उसमें भी वही कैमरा और लेंस होता है और वो कैप्चर करता है। सो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स यू आर वाचिंग, old films, they've all been scanned. Yes, and sir, being a film student, I know how a celluloid mean. और जब सेलुलॉइड का फिल्म जब हम प्रोजेक्शन पर देखते हैं एंड डिजिटल फिल्म देखते हैं, ऑब्वियसली जो फील है वो अंतर हमें पता होता है। क्विकली बस मैं अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, एज यू मेंशन कि डिजिटल में तो ऑफ कोर्स वी नो कि 4K 6K 8K तक का प्रोजेक्शन या रेजोल्यूशन हमको मिलता है, बट रील में जो है वो काफी सारी संभावना है, 16 18K तक भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या इंडिया में क्या हालात प्रोजेक्शन को लेकर हैं, मतलब क्या प्रोजेक्टर्स और उन सारी चीजों को लेके, क्योंकि आपके यहाँ पर तो मैंने देखा है एंड इन वर्कशॉप्स आल्सो आई हैव अटेंडेड, तो वहां पर जो फिल्मों को हमने देखा है प्रोजेक्शन पे, बट थोड़ा सा मैं ये सीन भी जानना चाहता हूँ कि प्रोजेक्शन को लेकर, प्रोजेक्टर्स को लेकर क्या इंडिया में हमारे देश में हालात हैं as compared to other countries. Yeah, so our biggest problem is that we have done away with movie projectors. Movie theaters still have projection. Agar aap Liberty in Bombay, if you go to Liberty or if you go to a few of the cinema halls, but as a, let me put it this way, most of the multiplexes are screening films on a DCP, which is 4K right now. Netflix and Amazon also on OTT platforms are showing on 4K. Most of the movie theaters, which is single screen, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके पास मूवी प्रोजेक्टर हैं, बट आप आज उनको DCP डालना पड़ रहा है उसी दो प्रोजेक्टर्स के बीच में। कि आपने अगर कोई पुराना मूवी हॉल देखा होगा या क्या होगा कि दो प्रोजेक्टर्स होते हैं, कि एक पहले चलता है और फिर दूसरा रील उसको फिर दूसरी बात चलता है, जैसे ओवरलैप करते हैं। प्रोजेक्शन इज सो गुड, इट वाज लाइक ओल्ड री रिकॉर्डिंग। लता जी को एक ही टेक में करना था, आज के जो सिंगर्स हैं 50 डिफरेंट वर्जन कर देंगे आपको, राइट, और जोड़ देंगे आपको। उस वक्त तो वैसे ही प्रोजेक्शंस भी हुआ करते थे, बट the entire scene has been taken over by the digital medium because DCP and all that kind of, because फिल्में भी रील पे नहीं बन रही, बहुत कम लोग बना रहे हैं, और वो बना भी रहे हैं तो माध्यम नहीं है अभी रिलीज करने के लिए, तो काफी बुरा हाल है। लेकिन मैंने 2018 में और 2019 में एक्चुअली क्रिस्टोफर नोलन आए थे सपोर्ट करने के लिए, तो वो खाली फिल्म में ही बनाते हैं, चाहे वो उनकी जितनी भी फिल्में आप देखेंगे, डंकर्क तक लास्ट और 10 अभी जो रिलीज हुई है, उन्होंने 70 mm में ही शूट किया। तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि आप क्या वैन गॉग को
ये बोलेंगे कि बॉस एक काम करिए, आप कैनवस में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप, मैं आपको आईपैड देता हूँ, उसमें पेंट करिए ना। तो फिल्म इज अ माध्यम, हमें चॉइस होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट कि हम किस माध्यम से अपनी फिल्म दिखाने चाहते हैं। और हम इंडियन इतने कमर्शियल हो चुके हैं कि सबसे पहले इंडिया और चाइना, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जितना जो भी चल के जा रहा है। जैसे अगर आप इंडिया में या बॉम्बे में भी मेरे ऑफिस के सामने खड़े हो जाएंगे और चांद की तरफ देखेंगे तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे, चांद की तरफ देखने लग जाएंगे, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्यों देख रहे हैं। तो हम उसी दौर के यही हम इसी पे हम मानते हैं। हमारा कर्तव्य है एज एन आर्काइव, और जब हम प्रिजर्व कर रहे हैं कि हम उस माध्यम को और उस प्रोजेक्शन को प्रिजर्व करें। और जिन आर्टिस्टों ने फिल्म बनाई थी सेलुलॉइड में जी, वो अपनी फिल्में दूसरे लोगों को, अगर वो रहे भी ना, हम उसी माध्यम से दिखाएं जिस माध्यम से उन्होंने सोच के बनाई थी। हम सनफ्लावर और वैन गॉग को नीला नहीं करेंगे, वो सनफ्लावर वैन गॉग ने येलो ही बनाया है, उसको येलो ही रहने देंगे, क्योंकि हम तो वो चीज रेस्टोरेशन में भी आना चाहिए। रेस्टोरेशन मीन्स कि आपने वो रिस्टोर किया जब वो फिल्म जब रिलीज हुई थी, क्या सराउंडिंग्स थी, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन था, ग्रेन्स था, नहीं था, कैसे लगती थी इमेज। आप उसको नया नहीं बना सकते। नया बनाएंगे तो वो दूसरी फिल्म हो जाएगी, वो फिल्म नहीं होगी। We have to be clear about that. Are we making the same film? No, sir. We want to make an HD version of the film. Fine. But that is another interpretation of the film. That is not what the artist had thought. Because I will give you an example. I told Agarwal ji of Ultra, sir, साहब बीबी और गुलाम में वो जो 4 डांसर्स आए थे, असली में क्या हुआ था कि मूर्ति साहब और गुरुदत्त शॉट ले रहे थे। आपको ये बात मालूम है सुदीप? सर बस मैं दखल देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है, तो लास्ट किस्सा में जी ये आपको पूरा एक आइडिया दे देगा। तो वो जूनियर आर्टिस्ट आते हैं ना, तो उन्होंने बुलाया जूनियर डांसर्स को सेट पे, साहब बीबी और गुलाम, लोगों ने फिल्म देखी होगी और गुरुदत्त डायरेक्टर थे उसके, और सखियां, गाना भी सखियां हैं। आप लोग वो गाना देखिए, महफिल जमा हुआ है और वो सब खड़े, नींद नहीं आएगी बिल्कुल। तो वो डांसर्स आए, तो गुरुदत्त ने कहा यार ये तो इनको तो मैं शूट नहीं कर सकता, ये तो कुछ अजीब सी हैं, मोटी हैं, ये वो है, ये कोई डांसर्स हैं ये। तो मूर्ति साहब ने कहा कि काम करते साहब, मैं लाइटिंग ऐसा करता हूँ कि इनके चेहरे नहीं दिखेंगे, आप वो गाना आज देखिए, राइट? एकदम हाँ। तो अब वो बाद में लोगों ने कहा यार क्रिएटिव क्या बढ़िया है, विजुअलाइजेशन और ये, बल्कि ये समस्या। लेकिन हमारे कुछ अभी जो लोगों ने रिस्टोर किया, उन्होंने कहा कि बहुत डार्क था शिवेंद्र जी, मैंने उसको खोल दिया। तो ये क्या इंस्पिरेशन हुई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू स्टडी द फिल्म मेकर टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्टोर अ फिल्म। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी सुदीप, and enjoy it, and I hope everybody enjoys the film. Thank you Sharmini, and thank you everybody, and thank you Vishwarang. What a wonderful festival and wonderful time and opportunity to be sir. I want to intervene when you were talking about the projections and the projectors, and when you showed the reel and everything. मैं वापस वहां पहुंच गया जब ब्रोमाइड और सारे जो केमिकल्स हैं उनका स्मेल आ रहा है, या वो रील को हाथ में लेने का जो चार्म है, या जब मैं आर्काइव में आपके यहाँ पर भी या टीआई के आर्काइव में भी मैंने कुछ रील्स अपने हाथ में पकड़े थे जो पुराने फिल्म मेकर्स के थे। मणिकौल का मेरे पास एक अचानक से वहां पर मुझे मिल गया था उनका स्टूडेंट डिप्लोमा 67 का, तो मैं सडनली 50 साल 40 साल पहले वहां पहुंच गया था। Whenever I
got a chance to interact. इतने सारे insights आपसे मिलते हैं. Thank you so much, sir. आपने इतना समय हमको दिया, and we are going to see the film The Immortals just after this talk. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Shivendra sir. Friends, before we bid adieu, I would like to remind you that we are going to watch the film The Immortals just after this masterclass in our invited films category. Friends, this will be the closing film of Vishwarang International Film Festival, so don't miss it. And thank you all. Good night. Thank you.